Hello everyone, this is Disha. Welcome back to the channel Medical Disha. In this video, I will be sharing the important formulas of the chapter oscillations. First is equation of simple harmonic motion. D square x upon dt square plus omega square x is equal to 0. This is the standard equation of simple harmonic motion. Omega is angular velocity. Equation of displacement is x is equal to a sin omega t or x is equal to a sin omega t plus alpha. Velocity is given by v is equal to a omega cos omega t or v is equal to a omega cos omega t plus alpha. Velocity is also given by plus minus omega under root a square minus x square. Acceleration is given by a is equal to minus omega square a sin omega t or minus omega square a sin omega t plus alpha, or a is given by minus omega square x, because a sin omega t is nothing but it is x. So a can be written as minus omega square x. Second is period of a particle executing SHM. So time period of a particle which undergoes simple harmonic motion is given by t is equal to 2 pi by omega. Omega is angular velocity. For example, if there is a spring having spring constant k and mass m is attached to it, then time period of the oscillation of this mass will be t is equal to 2 pi under root m by k. If we have a simple pendulum of length L, then time period of the oscillation of simple pendulum is t is equal to 2 pi under root L by g. Frequency is inverse of time period. Tension in the string of simple pendulum at any point t is equal to mg cos theta plus mv square by L. Second pendulum, it is a type of pendulum. It has a time period of 2 seconds. Frequency will be 1 upon time period, that is 1 upon 2 hertz. And length of second pendulum on earth is approximately 1 meter and on moon it is approximately 1 by 6 meters. If simple pendulum is present in a lift and lift is stationary, then time period will be 2 pi under root L upon g. If lift is moving up with acceleration a, then time period will be 2 pi under root L upon g plus a. If lift is moving down with acceleration a, then t will be 2 pi under root L upon g minus a. If lift is in a free fall, when a free fall is there, then acceleration will be equal to g. So t equal 2 pi under root L upon g minus g. तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो आंसर इन्फिनिटी होगा. So these were some of the cases of simple pendulum in a lift, and time period of simple pendulum does not depend on mass. किसी भी फॉर्मूला में मास की कोई टर्म नहीं है. नेक्स्ट इज सिंपल पेंडुलम इन अ कार्ट. अगर एक कार्ट में सिंपल पेंडुलम है तो व्हेन कार्ट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन अल्फा, देन टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगी. तो ये टर्म डिनोमिनेटर में आएगी पूरी की पूरी. सो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन this net acceleration, that is under root alpha square plus g square. Second, when cart is sliding down an inclined plane of angle of inclination theta,
when cart is sliding down an inclined plane of angle of inclination theta. So net acceleration g cos theta होगी. So time period will be 2 pi under root L upon g cos theta. Oscillations of a loaded spring. Time period of a loaded spring is 2 pi under root m upon k, or T is equal to 2 pi under root x by g. X is the displacement of the spring, means extension in the spring. So x is basically the displacement in the spring. There are two formulas. T is equal to 2 pi under root m upon k and T is equal to 2 pi under root x upon g. Frequency will be inverse of time period, which will be 1 upon 2 pi under root k by m. And if mass capital M is suspended from a spring of mass small m, जो ये वाला फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट एम पाई के, ये उस केस में था जब स्प्रिंग का अपना कोई मास नहीं है, स्प्रिंग इज मासलेस. बट इफ स्प्रिंग ऑल्सो हैज सम मास, तो ये फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम प्लस स्मॉल m बाई 3 अपॉन के. A spring of spring constant K is cut into two parts having length L1 and L2. L1 is greater than L2. Then spring constant of larger spring यानी कि K1. K1 क्या होगा? K1 is equal to K total length upon L1. Spring constant of smaller spring K2 is equal to K L1 plus L2 upon L2. If two springs of spring constants K1 and K2 are connected in series, K series का फॉर्मूला क्या होगा? 1 by K series is equal to 1 by K1 plus 1 by K2, और KS is equal to K1 K2 upon K1 plus K2. और टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन KS की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. इफ टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो KP होगा K1 प्लस K2. T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन KP. KP K1 प्लस K2 होता है. नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो मासेस हैं m1 m2 और उनके बीच में एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट K, देन टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 K. If two springs oscillating with time period T1 and T2 are connected in series, then T series is equal to under root T1 square plus T2 square. If two springs oscillating with time period T1 and T2 are connected in parallel, then time period in parallel will be T1 T2 upon under root T1 square plus T2 square. Energies in SHM. First is potential energy. Formula of potential energy is half m omega square x square. x की वैल्यू a sin ओमेगा t प्लस फाइव पुट कर सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव. Potential energy will be maximum when x is equal to a, that is at extreme position. Extreme position पे kinetic energy 0 होती है और potential energy maximum हो जाएगी. And maximum potential energy is half m omega square a square. And U will be 0 when x is 0, that is at mean position. Mean position पे kinetic energy maximum होती है, potential energy 0 हो जाएगी. Next is kinetic energy. K is equal to half m omega square a square minus x square. Mean position पे maximum होएगी
एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होएगी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू U प्लस के, U हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और के होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर।